Okay, now today we start with function modules. Now this is basically where you actually keep your code as a module and you can reuse it in other programs and call the functions with function and function keyword. And it is invoked using the call function keyword and it is created in function type program. Functions cannot be maintained in other types of programs. So it cannot be maintained in a program. It is maintained separately. Okay. So it cannot be maintained in an executable type of program. And we will actually create a function module. Okay. And then we actually will create a functional group as well. Okay. So SE80 or SE37, let's see. So we can create our function groups through SE80 and through SE37. Okay. And function groups. VT67 function group 1 VT67 function group. अब यहाँ पे अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स की बात करूँ नेट को एक टोटल की बात करूँ फैमिली package will be local. Okay. And then we will actually give them the parameters. Okay. Function group ZT67 has been created, and then we'll create a function module. Okay. Create function module, function group. We have already created that ZT67. Okay. Function group ZT67. आपके booking.com वालों के पास जाएंगे मैं कहेंगे यार मुझे वहां पे इनपुट मिली आपने मुझसे 500 चार्ज किए ये 200 वापस करेंगे आपको वापस ये होता है ऑर्डर सेम टेम्पलेट को ये चीज आप इलावाजी को कहते हैं यार आपको तो पहले जरा मेरे लिए बुकिंग करेंगे तो यही सिनेरियो होता है आपको इलावाजी Over here what we have is the layout for. आपने कहना भैया आपको 20 करते हो तो ये एक्सपेंसिव रहती है आपने कौन सी चार्ज किए Let's set the attributes first. What are the attributes that we want to see? Okay. Normal function, regular function, remote enabled, update module. Now, regular function is what that will be invoked and called in a program. Remote is when you are basically integrating it with RFC. Remote function calls. Okay, RFC. Update module is basically what it updates, that function updates data in the database. Okay. We talk about import. We are going to import data. Okay. How are we going to import the data? Over here, we have function module Matner. Okay. Type, associated type will be Matner, material number. Okay. And material number. Okay. So whenever we invoke to a program, this is where, if you recall the parameters that we enter, the variables that we create with P, this is the parameter for function module. We can say P underscore FM. Okay. PFM function module Matna, which means this is a parameter coming from function module. Okay. And it will pull material number. Okay. Now, parameters that have to be imported, it can be listed over here.
and parameter that we are importing is IM Matner. Okay, let's do it IM Matner, not FM Matner, because it will help us to keep it in record. Associated type is the data element that we'll be using. We have been always using in business programs. Okay, and short text, of course. Export. Now, in export, what are we going to do? If we are importing something, rename. And import, IM Matner, export. So, what are we going to export? Parameter is X mattex. Export mattex. We are pulling material number, but producing what? Material description. Okay. Type associate type will be mattex, not matner. Okay. simple product selling paper. And by default, parameters are passed by reference. A reference means that we are pulling the material number to produce the description. Okay. If we are passing by value, then we have to select the checkbox in imports. Passing by value and optional parameters. Okay. Then we can actually use that checkbox. Parameters are mandatory. If it has to be made optional, then optional checkbox has to be checked, which is this one. Optional parameters that we can actually use these parameters or not. So optional parameters will be like language, SPRAS. Whatever is imported is purely imported by function module, and export tab. This export tab will actually export it to where? To the program that we'll write. In some scenarios, either program will give values or functional module. Okay. For values to be given from both program or functional, changing tab helps here. Over here, we can actually use parameters that we want to be seen. Okay. Okay. Now, user will never execute the function module. They are always invoked and called in the programs. Okay. Now, let's write a report and let's. And this is saved. Functional module will just save this. And we'll go to SC38. तो अभी आप अपना थोड़ा बहुत शेयर करना चाहें किन कामों में इन्वॉल्वमेंट और क्या करते हैं कैसे करते हैं उधर से मर्सी करें आप फंक्शन ठीक है ओके हाँ ठीक है Okay, now what is the code that we are going to write? Data v underscore mac text. जहाँ पे जिस पर्सन को ज्यादा आइडिया हो ना तो वो ज्यादा बेहतर बात कर ले उसको ज्यादा बेहतर बताओ Parameters कोई भी v परफेक्शन में नहीं underscore मिलती जो पोल थे जो क्वेश्चन थे वो बेहतर हो जाता type matter. Okay. Okay. हाँ हाँ Exactly. अभी आपके कुछ क्वेश्चन हो रिलेटेड हो जो आपके पास एक्सपीरियंस है Pattern. Okay, call function. Now, what is our call function? Function module. Okay, so it has already called that. Now it will be importing the parameters and producing and exporting the parameters. Okay, this is import, this is export. Okay. Okay, over here we write p underscore matner, p underscore
Okay. Partner. ये मैंने आपका ये आपका मैंने सवाल लिख दिया फॉरवर्ड किस तरह के आपका सवाल आ गया ये चैट पे आने वाला है Okay. Okay. Over here we have the full stop over here. Okay. देखो बताया ना कि एक P partner. P underscore matrix. किसी एक इंडस्ट्री में से नहीं Now this call function is starting from here and ending over here. Okay. इंडस्ट्री की बात करता हूँ हमारी आती है फॉर्मल डिग्री Now प्यूरिफायर और वाटर फिल्टर आते हैं check. एआरएल के अंदर टेक डिफाइनिंग में मैंने चार से लिखे हैं थर्ड इंडस्ट्री आती है आपकी हेल्थ एंड वेलनेस एनर्जी विटामिन और उसी के साथ दूसरे हैं जो कि यूएसए देश है जो कि एफडीए Now with this you can of course maintain a whole function with different parameters that can be imported and exported. Direct processing. की बात करूं इस तरह हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किसी एक इंडस्ट्री से नहीं रखा बट नो डिफरेंट है उनके साथ Oh. Has to be terminated found a statement that could not be executed in line 2 of program. The program type is include. The report program statement is missing. The following syntax error. The report program statement is missing. It is missing, I guess. C38. Oh. लेट्स सपोज आप किसी भी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन बाय कर रहे हैं मेरे फादर को डॉक्टर है Report. हम लोगों का भी था कि यार क्लिनिक्स हमने Function को call. करना है Backner. उसके अंदर आपका जितना भी परसेंटेज होती है ना उसकी डिस्क्रिप्शन राइट तो आपका 85 या 70 to 85% परसेंट जा रहा होता है आपका प्रॉडक्ट नहीं है Direct processing. ठीक है उसको आप सेल भी कर सकते हैं यूज भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जाएगा और आपको राइट करना है उसका साथ कैसे सीखना है लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसके अंदर भी जाना है जितना भी आप ये पैसा इन्वॉल्व करते हैं उसके आपको प्रॉपर सीधे मिलते हैं बजट का काम कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है वो आपने मुझे या गिला दी और कुछ Okay. Now variable. P partner. ठीक है सही है जरूर 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 वो इंशाल्लाह हम बैठ के देखेंगे उसके ऊपर Matrix. Now it has. मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ It has not actually assigned it. एक्सपीरियंस रहा है तो अच्छी बात है कि आप उधर और इधर का भी किधर डिफरेंस आईडिया F5. मैं आगे बता रहा था इधर इनको कि यार 70,000 से ज्यादा कंपनी है जो नाम इसी को यूज करती है लेकिन जो रजिस्टर्ड है ओनली की है पूरी दुनिया के 2. Okay. आगे आपको अंदाजा लगाने क्या चीज क्या Function group I. Okay. Function group has a problem. Let's go and check that in line 2 of the program. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को पूछ सकता आज की कन्वर्सेशन से रिलेटेड कोई एक अच्छी चीज लगी और कैसे अटेंड कर सकते हैं Line 2. इंशाल्लाह सिखा नहीं होते बस यही होता है जो नॉलेज खुद होता है वो कहीं ना कहीं गले में होते हैं समझ ना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अक्सर लोग घबराते हैं Does not begin with function 2. जिस दिन पता लगे कि किस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होने जा रहे हैं क्या करने का दुनिया में टॉपिक होती है Line 1. रात भी मुझे कहीं ना इधर बैठ के वहाँ मैं आपको पूरी समझाती हूँ बात ही पता नहीं बाकी अगर Call function. No, let's. ठीक ठीक सही है Pattern. Call function. अगर आपसे मैं बात Importing call function. Okay. 19 September. बाकी बात नहीं बड़ा अच्छा लगा वो तो बिल्कुल मुलाकात थी लेकिन सॉरी फॉर दैट मुझे भी ग्राउंड लेवल के ऊपर डिस्कशंस करनी है Active. विद इन नेक्स्ट 24 to 40 आवर्स के बाद मैं भी अपना एक फीडबैक शेयर करूंगा इलाके के साथ वो आपको बता रही हूँ कि आया अगर सब काम करते हुए हैं जो
तब तक के लिए आपको ये कहूंगा कि आप अपने आप की चीजों को Okay, देखें। let's see this in the next chapter, next lecture. Okay. बाकी सारा ठीक है, फिर चलो।